Hello everyone, this is Monisha Muzia to talk about the situation that prevents girls from achieving their dreams. This is what we say society fear. We live in the society where we consider people's opinion than our own opinion. In this society, peoples are built with inferiority complex than courage or determination. First of all, almost people don't know what exactly they want to do in their life. Now, the people who realize that they have a dream are afraid to take a step. They think what will happen if they fail. It's not their fault, it's the environment in which we guys live. People who don't even have a dream will tell you, dude, this is impossible. And the second thing is parents. We all love our parents and respect them. They do hard work so that we can live happily. They have experience in life, but there are certain things about which they don't know how it works, which they do not realize, and they keep telling their kids about their dream. That is impossible. Now it's the job of the kids to step forward and tell them what they really want to do and make them believe he can achieve his dream because he loves it. It will take some time for them to understand, but at the last, they will because at the end, they want you to be happy. Third thing is responsibility. We all have family, and some us are the oldest son or daughter of the family, which makes us more responsible. We need to start paying our loans, and then we need to make sure that our younger siblings are doing good. As we earning and when we look around us, that things are working fine because we are responsible in our life. We can't even think of doing something else on our life. This is going for any kid from a middle class family. If somehow you manages, you think about your dream, you will be a kind of forced to get married. And everyone knows after marriage, these things are not possible unless your partner understands you. There's so many factors and which you can blame that they cannot achieve their dreams because of these things. But remember, everything is possible if you are dedicated for your dream. Whatever the points I have mentioned from all those conditions, there are countless peoples who rise and become successful. Look around you and see those kids on traffic signal. They also have a dream and they're ready to give up on them because they know it's their dedication which will make them successful. So instead of blaming for all our failures and fear, be brave and take the blame on you. You are the only reason for your failure, but remember, you will be the only reason for your success as well. And without failures, there is no excitement in your achieving your dreams. So go ahead and do what you want to do in your life. Believe in yourself and you will achieve it. Thank you so much for these golden opportunities. Yambo, I would like to say thank you for giving us this opportunity to stand before you all as girls and also to stand on behalf of each and every girl child. We are girls from Presentation Secondary School in Kaoma, western part of Zambia. There are things that us girls really need to achieve in our lives, and these things are not made due to traditional activities, lack of support from our societies and our family members. We are also considered to be inferiors. Rebecca, what do you think about this issue of discrimination over the equity and equality of a girl child? As we celebrate the International Day of a Girl Child, I would like to share my experience as a girl and what I've been passing through. I'm from a family background of poverty, and that is one of the barriers of my success. My dream and career is to become a journalist or a soldier when I complete my education, but I lack motivation and support from my family members and the community due to the way of living in our home. But as a girl child, I need equity in order for me to exploit my talents, to exploit my dreams and potentials. Some other barriers of success in a girl child's life is the traditional practices. When a girl child is put in the initiation ceremonies, they are prepared for marriage, and afterwards they are built houses of their own.
dear parents, do you expect a girl child really to concentrate on their studies after they have undergone all those? No, because they would want to experience and practice that which they've been taught. As a girl child, I want to challenge you that we are not just meant to be married off, or rather to be housekeepers, but we are able to do that which a boy child can do if only we are given a chance. Because if we are just married off to old men and we fail to do that which we are, that a wife should perform, those duties, then we are also being, in other cases, girls are being beaten. So as really girls, we are really vulnerable, and we really need you, our parents, to come to our aid as a girl child, because we are able to do that which you expect from boys. We are also able to do it. So Joyce, what can you conclude on this issue of equity in a girl's life? Thank you, Rebecca, for giving me this opportunity. In my conclusion, I would like to look forward to the community's response on how they are going to help us get out of this entanglement of a predicament kind. Dear parents and the society at large, make sure that you teach, or rather give the right information to a girl child at the right time, and make sure that there is balance between the tradition and modern teaching. Dear parents, we need you more. Do not engage us into early marriage, because we also can do the best. Please, dear parents, and also remember, you don't define us, you just refine the find that you found in us. So, We as girls demand equity, not just equality. We are able, we just need a helping hand. Thank you. मैं शबनम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल रोहतक की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री मकसूद अली है, वह एक ऑटो ड्राइवर हैं, और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती शमीम है। हम 3 बहन व एक भाई हैं। हम सभी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल रोहतक में ही पढ़ते हैं। यहीं से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। इक्विटी का मतलब क्या है? व्हाट इज इक्विटी? क्या समानता को पाना या समानता को पाने के लिए अवसरवादी होना? मेरे लिए इक्विटी एक मौका है। इक्विटी मीन्स टू मी एन अपॉर्चुनिटी। इसके ऊपर मैं आपको एक घटना बताती हूँ। एक बार मेरे पिताजी का किसी दुर्घटना में हाथ व पैर टूट गया था, जिसके कारण वह ऑटो नहीं चला सकते थे। परंतु हमने लोगों से मदद मांगी कि कोई उन्हें अस्पताल ले जाने में हमारी मदद करे, परंतु कोई आगे नहीं आया। हम बहनों ने तुरंत पापा को ऑटो में डाला और रोहतक पीजीआई अस्पताल लेकर गए। वहां पर उन्हें प्लास्टर चढ़वाया और वापस घर पर लेकर आए। मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं ऑटो चला सकती हूँ। मेरे साथ जो लड़कियाँ पढ़ती हैं वह ऑटो नहीं चला सकती। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पास हिम्मत तो है माता पिता की मदद करने के लिए, परंतु उम्र के कारण मैं ऑटो नहीं चला सकती, अपने माता पिता की हार्दिक सहायता नहीं कर सकती। तो इसे मैं क्या कहूँ, इक्वालिटी और इक्विटी? Let me set forth the authenticity. The universe is your true ally. Yourself is your enemy. Who are against on that story of reality? Nobody. No one wants equality because there is a chaos named hypocrisy. Cherry lips so sweet to taste, but no one knew it was a paint. Noise that sounds empowerment. They sing it with life, yet kill each one when turns to the right. I get my name on the knife, but I am the happiness itself that wants to save lives. Who are you to kill my vibe? Fairies want to see me cry. All the flowers in my chest are about to demise. They told me to be unapologetically lost are the tears they named infirmity. Yet still, fate dance with me. Red wine that let me fall asleep so deeply. Blood marks on my bed sheets. Causes of my cloud castle to dread me. I bear tranquility. When the strange voice trying to kiss all my jewelry. My dear, hypocrite tales drowns me. See me doomed of all the envy. But life wouldn't deny me as the curse of fate through reality.
As moonbeams lit up my cigarette, no one knew that villain I am and made all the serpent clamor through passivity, witnessing their mournings as I offered fire to their graveyard, which is their destiny. Fairies and goddesses are making magic, honoring their presence and praising their deaths, yet villains are victims whose stories have never been told. Mary Andrew eulogizes my body and gives me disquietude as I lay in my throne. How could you ever know me? I'm an angel who deserves to be praised by no one. All the serpent bowed down and kissed my foot. Diamonds on my wrist entangled by my own catastrophe. I owe in nothing in humanity, nor forsaking truths to their tongue will always be hypocrisy. My dear, stop dwelling my shine. I won't let you sit on my throne and drink some wine. Equality is leaving the door open for anyone that has the means to approach it. But equity is making sure that there is a pathway to that door for those who need it. I'm Janvi Venkatavisagan, and I would love to tell you about what equity means to me. So equality means when everyone is given equal opportunities and accessibility and are left to do whatever they please with it. But that doesn't mean that everyone is inherently equal. Whereas equity recognizes that there are some people at a larger disadvantage than others, and it aims at compensating these disadvantages to ensure that everyone can attain an equal lifestyle. Now moving on to a more fundamental topic, gender equity or educational equity. It refers to both male and female concerns, yet most of the gender bias in the world is against women. Gender bias in the world has become very evident, and it's an underlying problem in many countries, especially the developing ones where cultural and social stigma hinder the growth of the women. Now, why equity in education? Education is universally acknowledged as an essential and fundamental right to humans. Equity in education increases the workforce of a nation, and it leads to better standards of living for so many women across the globe. Education is the most powerful tool of change in a society, and access to education is a telling indicator of the woman's status in that community. Gender equity is referred to as the most fundamental factor to attain sustainable development. Moreover, a child's gender or their social, racial, and geographic background is totally irrelevant to the quality of education they should receive. Simply put, nothing should hold back a child from the opportunities they receive to pursue their talents and go after their dreams. Now, I would like to mention two women whose influence has been unbeatable due to the impact of their struggle. Their actions has inspired so many young women across the world to strive hard for quality education. A female educational activist, Malala Yousafzai, and an Irish philanthropist, Nana Nagel, whose advocacies have become international movements where young women have come to realize and have become more aware of the fact that of the concept of educational equity and its importance. So equity to me means the pathway to quality education and women empowerment, and can only be achieved through education. Thank you. मेरा नाम पूजा है। मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल रोहतक में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र पांडे है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती नीलम देवी। हम दो भाई बहन हैं। हमारा देश आज भले ही आज़ाद हो गया है, पर मुझ जैसी पता नहीं कितनी बच्चियाँ अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मैंने ये पाया है कि कई लड़कियों को शिक्षा शारीरिक विकास से वंचित रखा जाता है। हमारी तरह उन्हें भी पढ़ने की इच्छा है, वह भी पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल करना चाहती हैं, पर उनकी इस सफलता के मार्ग पर अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, भेदभाव आदि। हरियाणा में बेटियों को पढ़ाने व बचाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, अंत्योदय योजना आदि। पर क्या इन सब योजनाओं से बेटी को संपूर्ण रूप से शिक्षा मिल पा रही है? क्या उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है? आज भी समाज में बेटी होने के कारण प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज, खेलकूद से बेटियों को दूर रखा जाता है।
यदि हमारा बचपन इतनी हीनता से भरा होगा तो हम बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी, हम हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। बेटियों के प्रति माता पिता समाज अपनी हीनता को नहीं बदलता। बेटा बेटी के भेदभाव को करते रहे तो हम बेटियां कैसे आगे बढ़ेगी, हमारा सम्मान कैसे होगा। सब सरकार की योजना असफल रह जाएगी, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है तो अपने आसपास की रूढ़िता आदि को बदलना होगा, समाज को जागरूक करना होगा, तभी हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होंगे। धन्यवाद। Hello everyone, this is Naomi Smita here to be a part of the 2020 International Day of a Girl. I'm here to specify that what does it mean to be bold being a girl? Now, when it comes to the nature of a male, he is said to be daring and superior. But when it comes to a girl's nature, she is expected to be beautiful, soft and obedient. Generally, when girls are being raised up by their families, they are taught to be soft and to take up whatever is given to them, be it a positive or a negative one. Most of the parents are always worried about what will the society judge if they make their daughter do this. What kind of comments will they get if they make their daughter to dress up like that? What kind of regards or prestige will they get if they make their daughter to be educated? Like these, expectations are being piled up in a girl's mind from the beginning stage of her infancy. Unfortunately, most of them have resulted in the timidness or the burial of a girl's life and future. When people expect girls to be pleasurable to the society, then why can't we girls expect that society to please us? Yes, of course, girls need to be soft and kind, because being too bold is even weird. But not all the time. In today's world, we could see that girls are ending up their lives for nonsensical reasons. But at the same time, girls are even being forced to end up their lives due to male dominance. Therefore, it is the responsibility of every parent to not only provide their children with proper education, but at least a girl child must be bold enough to speak what's there in her mind. Even in this competition, each and every girl who came to know about this competition would have been brilliant enough to satisfy the given artistries. Luckily, not all will be doing that, which means girls are still being restricted to a certain extent. We girls are still waiting for that day which will arrive unless and until we are strong enough and well built within ourselves and take up the courage to speak our minds and to bring our fruitful desires into actions. So what am I up to is, female domination was there in the past. It is in the present, but it lies in our hands to prevent it in the future. So dear friends of my gender, please feel zealous to be a girl. Only then we will be able to equate ourselves to the ones who are mocking us down and to make the whole world accept our equity. Let's prove that equity means being fair and impartial. Let's start preparing ourselves to grow into a dauntless and lion-hearted woman, thinking that a girl doesn't need a special place to make herself special. Instead, make herself special to make that whole place special. I would like to thank the International Day of the Girl for being so innovative in bringing out our voices. Finally, I would like to conclude with the well-said quote of Maria Larissa. There is a wall of silence against women and violence, and every time a woman speaks out, it cracks and breaks the wall. Let's speak out, crack it, and demolish it ultimately. Thank you. Good day, everyone. मेरा नाम नीतू रानी है। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं मंडी डबवाली के शिवनगर मोहल्ले में रहती हूँ। मैं दीपांजलि सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। हमारा परिवार और यह समाज ही लड़कियों की आज़ादी और आत्मविश्वास को छीनता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे परमेश्वर ने एक लड़की के रूप में संसार में भेजा है। हम 5 बहनें हैं। हमारा परिवार ही हम लड़कियों की भावनाओं को नहीं समझता है।
उनको लगता है मैं एक लड़की हूँ और लड़की की तरह ही रहूं। यही बात लड़कियों के मन में आत्मविश्वास की कमी पैदा कर देती है। इसी कारण दबी सी रहती हूँ और कभी भी मुझे अपने ढंग से जिंदगी जीने का मौका नहीं दिया जाता। इसका मेन कारण है मेरा खुद का परिवार। उनकी इस सोच को बदलने के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने आप में पूरी ही तरह से आत्मविश्वास पैदा करूँगी और अपने परिवार व आस पड़ोस को बताऊंगी कि मैं भी आज़ादी से रहना चाहती हूँ। अगर मेरा परिवार ही इस बात को समझेगा कि और मुझे बाहर आने जाने की आज़ादी देगा, तभी मैं मेरे अंदर विश्वास पैदा होगा और इसके कारण मैं अपने आस पड़ोस की सोच को बदल सकूंगी और आज़ादी से जी सकूंगी। धन्यवाद। What is power? Power is the word she. Through the injustice, the brutality, the violence, the abuse, harassment, child marriages, we have sailed right through and managed to wear a smile every other day like all is well. That is power at its best definition. We are here and we still stand. Determination, firmness of purpose, we are not backing down. We know what we want. We won't stop until something is done. Advocating for fairness, equality, and a balanced balance. We've waited for action, yet none was taken. We are tired of hearing words, empty promises. Change is sin and not hurt. We want a better world, better communities, and effective systems. A world in which girls can be whatever they desire. A world in which girls like me can not only run but own businesses. A world in which girls can be allowed to venture into any careers of their choices without culture and gender limiting them, without being held back just for being girls. A world in which our ideas are taken more seriously. A world in which we do not have to say one thing a million times just so we could be heard. But now we knock on every door. We all see the imbalance. Why are you quiet? Equality is just but a mere facade, manipulating us into believing we are equal. But we cannot watch from the sidelines. Not anymore. It is not who we are that brings about the change, but who we have on our side. I will only stop advocating for girls when somebody directs me to a strong agenda. Until then, I am Tsunutinda Murisa. I am 18 and I'm from Zimbabwe. Hi, my name is Tsunutinda Murisa and I'm from Zimbabwe. I'm 18 and I'm still in school, and this is what I had to say. The reason why I participated in the 2020 International Day of the Girl Speak Out is because I feel there's a lot to be said and yet people are still quiet. So I do hope that me speaking out motivates more people into saying what needs to be said. One voice makes a difference, but 1,000 voices will bring about a tremendous change. मेरा नाम मुस्कान है। मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल रोहतक में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री पवन कुमार है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती ममता रानी है। हम सिर्फ 2 भाई बहन हैं। आज मैं आप लोगों को अपने जीवन से संबंधित एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसमें आज के ज़माने की सच्चाई छिपी हुई है। आओ ज़माने को बदलते हैं, ज़माने को चलो बदलते हैं, एक नए दौर की ओर चलते हैं। ज़माने को चलो बदलते हैं, एक नए दौर की ओर चलते हैं। जीवन ही कुछ अपूर्ण है,
जीवन ही कुछ अपूर्ण है, इस बात को हम मानते हैं। पुकार को तो सुनते हैं, पुकार को तो सुनते हैं, पर चीख को नहीं ललकारते हैं, पर चीख को नहीं ललकारते हैं। परंपरा के इस आवरण में छुपे हर भेद को हम उभारते हैं। उड़ान से लिंग का रिश्ता क्यों? उड़ान से लिंग का रिश्ता क्यों? ऐसे प्रश्न हम खुद से पूछते हैं। मेरा सच और सच्चाई के अंतर को हम पहचानते हैं, अंतर को हम पहचानते हैं। निरंतर समाज की सृष्टि के लिए निरंतर कदम उठाते हैं। एकजुट नहीं, एक श्रेष्ठ नहीं, एकजुट बन जमाने को बदलते हैं, धन्यवाद। Imagine you have been given 2 apples and you see 2 people, one who is starving and the other who is with full tummy. Will you choose equity or equality? Greetings and salutations. Myself, Nicolina Sandra Thomas, and I would like to share my views on equity. Once Rick Riordan said, "Fairness doesn't mean everyone gets the same. Fairness means everyone gets what they need." Similarly, treating people according to their needs is equity. Not everyone in this society comes from the same situation. It differs. In the case of women, there are girls who are in need of basic necessities, but the opportunity which is rendered by this society has been hindered with their need for basic facilities. To make it simple, put yourself in a situation where you and your male rival has been entrusted with a presentation each. Of course, you need to research, drive from place to place, collect opinions, and spend a lot of time in it. If you're a male, it would be easy, but for a female, it's all the way around. If you're a teenager, you would have faced barriers like lack of safety, lack of guidance, financial crisis, male chauvinism, and so forth. If you're a married woman, you would have faced family pressures, balance of responsibilities, incomplete duties, and above all, criticism. Though it is the same opportunity for both, women suffers more. Talking about community, most of us fall into the middle class community in which we are deprived to follow our dreams. Instead, we are asked to make short-time money or to play safe in our careers. Let me tell you a fact. India is a home for 118 billionaires, but only 5 of them are women. I'll tell you the reason. Opportunities are not ready to be modified for us, but we are asked to be flexible to it. In order to change this situation, we need to implement this revolting idea of equity in our society. So how are we going to do that? For me, I have decided to join the IGG organization, which motivates future women leaders. Though we have a lot of hurdles, let's not forget our few women pilots. Yes, India has the most number of women pilots across the globe. They have proved that if we are restricted to walk, then we'll fly. We've got to change the syndrome that girls are replaceable. For that, equity is the only way. So let's get started. Thank you. मेरा नाम दामिनी है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं मंडी डवाली के हर्षनगर मोहल्ले में रह रही हूँ। मैं दीपांजलि सेंटर उड़ान फील्डर पार्लियामेंट की लीडर हूँ। लड़कियों और लड़कों में जो अंतर किया जाता है वही हम लड़कियों की पढ़ाई में एक सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, अपनी जिंदगी जीने दो, पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, पढ़ना ही मेरा मान है, तो पढ़ना ही मेरी जान है। पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, अपनी जिंदगी मुझे जीने दो, बिना किसी शिकवे शिकायत के। आज जमीन पर हूँ, कल आसमान का सितारा बन कर दिखाऊंगी। पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, आज मुझे अपने पंख फैलाकर उड़ने दो। पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। आज अंधेरा है, कल रोशनी होगी। आज पढ़ने दोगे तो कल सूर्य के प्रकाश की किरणों की तरह अपनी रोशनी चारों ओर फैलाएंगे। पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो,
पढ़ने दो, मैं एक लड़की हूँ, कल लड़कों की बराबरी भी कर जाऊंगी। पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, बस हाथ में एक कॉपी पेन दे दो, आपकी बेटी एक नाम भी कमा लेगी। जब एक लड़की पैदा होती है तभी उसके माँ बाप उसके बारे में गहराई से सोचना शुरू कर देते हैं और उसकी किस्मत की फैसला तभी उसके माँ बाप तथा ये समाज कर देते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ पर हमारे परिवार में मुझे ज्यादा से ज्यादा 10वीं या 12वीं तक ही पढ़ाया जाएगा, इसके बाद अब तू घर पर ही रहे। जवान लड़की को बाहर भेजना अच्छा नहीं समझा जाता, फिर क्या अच्छा सा लड़का ढूंढ कर उसकी शादी कर दी जाती है। अरे कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक तो मिलना ही चाहिए। क्यों एक लड़की को घर की 4 दीवारों में ही कैद होकर रहना पड़ता है? क्यों उसे घर जाने से पहले माँ बाप की आज्ञा नीचे स्थान पर रखा जाता है? लड़की को पढ़ने दो, लड़की को भी आगे बढ़ाओ। क्यों हमारे समाज में लड़कियों को अभिशाप समझा जाता है? क्यों लड़कियों को पैदा करने से पहले ही उनकी मृत्यु कर दी जाती है? हमारे समाज में इतनी बुराइयां क्यों हैं? क्यों एक लड़की को ये समाज घर से बाहर निकलने नहीं देता? क्यों उसे घर की 4 दीवारों में ही बंद कर रख दिया जाता है? क्यों एक लड़की को ये समाज पांव की जूती समझता है? क्यों उसके हाथ से कॉपी पेन छीन लिया जाता है और उसे घर रहने पर मजबूर कर दिया जाता है? जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो उससे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं और उसका करती है तो उसके साथ कोई नहीं होता। क्यों हमारे समाज में लड़की के साथ इतना भेदभाव किया जाता है? क्यों एक लड़की को लड़कों के समान नहीं समझा जाता? हमें भी लड़कों के बराबर ही समझा जाना चाहिए। धन्यवाद। สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัมพายปัจจุบันอายุ 18 ปีจากประเทศไทยฉันอยากเป็นคุณครูเมื่อโตขึ้นแต่การที่จะเป็นครูก็มีการแข่งขันสูงและใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้เป็นอาชีพนี้การเป็นครูต้องมีความอดทนและความเสียสละเช่นการไปสอนเด็กๆที่ไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองดิฉันเป็นผู้หญิงที่ชอบความท้าทายใหม่ๆกล้าหาญเข้มแข็งกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในชีวิตผู้หญิงมีสิทธิ์และโอกาสในการศึกษาทำให้ดิฉันสามารถสร้างความเสมอภาคในชีวิตเมื่อเรามีการศึกษาเราสามารถช่วยพัฒนาสังคมและยังสร้างครอบครัวที่ดีได้อีกด้วยดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในสังคมไทยเพราะสังคมของฉันให้สิทธิ์และความเสมอภาคไม่ว่ากับเพศใดเช่นในด้านการศึกษาการดูแลครอบครัวและการทำงานเช่นหมอพยาบาลครูและอื่นๆอีกมากมายส่วนใหญ่ในสังคมของฉันมีความเสมอภาคแต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีการเอาเปรียบผู้หญิงเช่นผู้หญิงมีสิทธิ์น้อยกว่าผู้ชายในการตัดสินใจภายในครอบครัวขอบคุณค่ะ मेरा नाम अनमोल है। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मंडी डबवाली हर्षनगर मोहल्ले में रहती हूँ। मैं दीपांजलि सेंटर चिल्ड्रन पार्लियामेंट उड़ान ग्रुप की मेंबर हूँ। बड़ी मतलबी से समझती हूँ लड़कियों को बराबरी का न्याय मिले उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। लड़की हूँ मैं लड़की हूँ मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। लड़की हूँ मैं लड़की हूँ लड़के को भी प्यार करो लड़की को भी प्यार करो दोनों को बराबरी का व्यवहार करो। उसके मैं एक लड़की हूँ मैं बहुत खुश हूँ। हमारे मोहल्ले में लड़का लड़की में बहुत भेदभाव किया जाता है। लड़का पैदा होने पर बहुत खुशी मनाई जाती है लेकिन लड़की पैदा होने पर ऐसी खुशी नहीं मनाई जाती है। लड़का जितना चाहे पढ़ सकता है लेकिन लड़की को 10 या 12 तक ही पढ़ाया जाता है उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है। ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। अगर समाज में लड़का लड़की कोई भी गलती कर दे तो उस गलती की सजा ज्यादा लड़की को ही मिल जाती है। लड़की को ही उस गलती की जिम्मेवार माना जाता है। ऐसा अंतर क्यों किया जाता है? मुझे इसमें बराबरी का न्याय मिले। मुझे भी मेरे मोहल्ले में रहने का बराबरी का हक
चाहिए। मुझे भी समाज में बराबरी का हक और न्याय चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी आज़ादी से जी सकूं। धन्यवाद। She, a myriad of thoughts engulf her mind as she contemplates about girls who couldn't step onto the ladder of education, imagining a world where fairness reigns undoubtedly, a world with room to maneuver their dreams into reality. Beyond the shadow of doubt, in every corner of the country there sits a girl, one in a million, chained to the shackles of patriarchy, fearing that her dreams will remain as nothing but dreams. Believed to be a moon among the stars, she knows that her heart aches to be the sun, shining with her own light, giving her all to everything she does. But oh, so little they know. Given the chance, she has a mind so revolutionary it can empower millennials of her kind to raise the world and teach it how to be fair and equal. मेरा नाम अंकिता है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं मंडी डबवाली के शिवनगर मोहल्ले में रहती हूँ। मैं दीपांजलि सेंटर के चिल्ड्रन पार्लियामेंट की मेंबर हूँ। इक्विटी से मैं समझती हूँ कि लड़कियों को समाज में बराबरी का सम्मान व इज्जत मिले। इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ, आसमान में उड़ना चाहती हूँ, पढ़ना लिखना चाहती हूँ, ऊंचा उठना चाहती हूँ, बादलों में रहना चाहती हूँ, खुलकर रहना चाहती हूँ, इज्जत पाना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ, आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आज भी हमारे आस पड़ोस में लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है। लेकिन कई कारणों से आज भी लड़के और लड़की बराबर नहीं हैं। मेरे घर में हम 2 बहनें हैं। मम्मी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा आस पड़ोस मुझे लड़कों के समान नहीं समझता। वो सोचता है कि मैं एक लड़की हूँ और लड़की की तरह ही घर के अंदर रहूँगी। इस बात से मुझे बहुत बुरा लगता है कि मुझे लड़कों के जैसे कोई भी काम करने की आज़ादी नहीं है और ना ही मुझे अपनी इच्छा तक पढ़ने की आज़ादी है। मैं अपने आस पड़ोस की सोच को बदलना चाहती हूँ। मैं अपने हक चाहती हूँ। मैं हर बात में अपनी बराबरी चाहती हूँ ताकि मैं समाज में इज्जत व सम्मान के साथ रह सकूं। मैं समाज की खोखली सोच को बदलना चाहती हूँ ताकि मैं समाज में इज्जत व सम्मान पा सकूं। धन्यवाद। Namaste, I am Nidhi Kumari from Maharashtra, India. I study in 8th standard in St. Joseph Convent School. Today I am going to give you a message on girl child. For me, being bold means to stand courageously and daringly anywhere. A bold person never hesitates for anything. They come forward to do something for the society and ready to do anything for the society. Gender equity means it is fairness of treatment for a girl and a boy according to their respective needs. We live in different culture and background. In my community, many girls do not have access to feminine sanitary products and are often pulled out of school once they reach menstrual age. The shortage of government school means the children have to walk a long distance, a journey that can result in sexual harassment and exploitation of many girls. But today, I am proud of my parents and for my community who gave me facilities to study, to communicate with others and made me a free child of a society. I pray to God that other girls may get the same opportunities as I got in my life. Thank you. मैं आरती, मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल रोहतक में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन कुमार है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती आशा देवी है। इक्विटी
इक्विटी का मतलब है कि प्रत्येक छात्रा को उनकी आवश्यकता का समर्थन होना। मैंने इक्विटी के ऊपर एक चित्र बनाया है जिसमें एक स्वस्थ लड़की व विशेष लड़की दोनों को दिखाया है। दोनों के समान अधिकार है शिक्षा पाना, परंतु दोनों के जरूरतें अलग अलग है। स्वस्थ लड़की सीधे सीढ़ियों से चढ़कर शिक्षा पा सकती है, परंतु विशेष लड़की के लिए रैंक होना जरूरी है, तभी वह शिक्षा के समान अधिकार को पा सकती है। धन्यवाद।